गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 555 टाइमर का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। इस टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक और आईसी के बारे में। दैट आईसी इज 566 आईसी। दैट इज ऑल्सो नोन एज voltage control oscillator IC. What do you mean by voltage controlled oscillator? So first of all, what do you mean by oscillator? What do you mean by the term oscillator? Oscillator means oscillation of waveform will be obtained. That oscillation may be a sinusoidal kind of oscillation, a square kind of oscillation, or triangular kind of oscillation. So any kind of the circuitry which will generate waveform which are oscillating in nature will be termed as oscillator. And the very important thing is in oscillator is कि there is no such input, no oscillating input is provided. No oscillating input is provided. कोई भी oscillating input हम लोग नहीं देते, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलता है वो oscillating मिलता है। हम लोग इनपुट पे क्या देते हैं? We normally apply DC input. DC input हम अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट पे क्या मिलता है? हमें आउटपुट पे चाहे साइनोसॉइडल वेव हुई, चाहे स्क्वायर वेव हुई, चाहे ट्रायंगुलर वेव हुई, वो ऑसिलेट करते हुए मिलती है। सो व्हाट यू मीन बाय वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर मींस, तो ऑसिलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑसिलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके की हो सकती है। एक तो उसकी वेवफॉर्म का शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। मींस द शेप ऑफ द वेवफॉर्म मे बी साइनोसॉइडल, may be square, may be triangular, or any kind of the such waveform or shape which is being repeated again and again over a time period. That will represent the waveform of the oscillator or the shape of the waveform of the oscillator. And the second thing will be, which will be very important, that is time period and frequency of oscillation. Means in oscillator, the major characteristics is frequency f0 of the oscillator. So what is the oscillating frequency? So here the term voltage controlled oscillator will lead, what it will lead means we will control this particular property of oscillator, that is frequency, by help of voltage. And if we are able to do it, then it will be termed as voltage controlled oscillator. Okay. So what do you mean by voltage controlled oscillator? Voltage controlled oscillator is a type of oscillator where the frequency of the output of oscillations can be varied by varying amplitude of input voltage. Means if input voltage will vary, if suppose if input voltage becomes high, then automatically the frequency will become high. If input voltage becomes low, then automatically frequency will become low. So in voltage control oscillator, these are commonly used. So where it will be used? Obviously in frequency modulation techniques. Frequency modulation techniques में क्या होता है कि modulating voltage high या low होने के साथ साथ जैसे जैसे modulating voltage vary करता है, वैसे वैसे frequency भी vary करती है। ठीक है, तो in all kind of the frequency modulated signals or angle modulated signals where these are mainly frequency modulation and phase modulation, and then after again is PLL, that is phase log loop. Okay, so voltage control oscillator is an oscillator in which an output signal whose waveform can be varied over a range with a control of DC voltage. Obviously एक oscillator की तो एक fixed frequency होगी, means oscillator will have certain fixed frequency,
ठीक है ना. Suppose this is particular frequency, fixed frequency f naught, but by applying a particular input voltage we can vary it up to delta f in negative direction and vary up to delta f in positive direction. Suppose we are having an oscillator which is concentrated at 800 megahertz, and by using this VCO, we can change its frequency up to 700 megahertz to 900 megahertz. So by varying input voltage, we can vary the oscillator output frequency, ठीक है ना, up to a range of frequency. Okay, so and the output of frequency will be definitely related to the input voltage. Okay. So VCO provide a linear relationship between applied voltage and oscillator frequency. The applied voltage is called control voltage. Whatever the voltage will be applied, that will be called control voltage. And control of the frequency with help of control voltage is known as frequency conversion. Here, VCO is like as voltage to frequency converter. We can also term it as voltage to frequency converter. So the IC used for it is 566 IC number. The last IC we have studied is 555 timer IC, but this one is 566 IC number. जैसा कि 555 में था, पिन नंबर 1 was grounded, पिन नंबर 8 was connected to the VCC, same यहाँ पर है. पिन 555 में pin number 2 was connected to the trigger, but here no trigger will be used. Here it will be not connected. Okay. At pin number 3 वहां पर हम आउटपुट ले रहे थे, यहाँ पर भी स्क्वायर आउटपुट मिल रहा है, और पिन नंबर 4 पर वहां पर हमारा रीसेट कनेक्टेड था, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्रायंगुलर आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है. मींस वी विल गेट आउटपुट एट 2 पिंस, one at 3 which will result a square waveform at output, and another one is 4 which will result a triangular waveform at output. Okay, and there will be a capacitor connected, a resistance connected, and input will be connected. Input will be connected at 5, capacitor will be connected at 6, sorry, resistance will be connected at 6, and capacitor will be connected at 7. By the help of all these, we will control the frequency. We will control the frequency. Okay, we will control the frequency. So this particular voltage together with the resistance will result control voltage. Okay, control voltage. So internal block diagram को अगर देखें, internal block diagram में आप देखिए, pin number 8 is connected to the VCC, pin number 1 is connected to the ground, pin number 7 के across देखिए कैपेसिटर कनेक्टेड है, pin number 5 पर इनपुट वोल्टेज जाएगा, ठीक है ना, pin number 6 पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि VCC से कनेक्टेड है, ठीक. पिन नंबर 3 पे आउटपुट, पिन नंबर 4 पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आउटपुट, और पिन नंबर 2 का यूज तो होता ही नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है, दैट इज कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है ना, कांस्टेंट करंट सोर्स. और कांस्टेंट करंट सोर्स पे जो इनपुट आएगा वो कहां से आएगा, देखिए कांस्टेंट करंट सोर्स पे जो इनपुट आएगा वो 5 और 6 से आएगा, मींस एक रेजिस्टेंस और ये जो इनपुट वोल्टेज होगा इसके जरिए आएगा, ठीक है. देन आफ्टर यहाँ पर देखिए ये पहला एम्पलीफायर यूज किया गया, दैट इज बफर एम्पलीफायर. Then after second one is a Smith trigger, and third one is inverter. Okay, there are 3 op amps which have been used. ये constant current source एक constant current का source generate करेगा, constant current generate करेगा, which will go to the buffer, and through this particular voltage charging and discharging of capacitor will take place. And by the help of charging and discharging of the capacitor आप देखिए, और जो भी चार्ज डिस्चार्ज होगा वो बफर के थ्रू सीधे डायरेक्टली ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करेगा. मींस by the help of the capacitor which is connected to at the pin number 7 we will generate triangular waveform, ठीक है ना. और ये जो कैपेसिटर से जो वेवफॉर्म कनेक्टेड होगी ये स्मिथ ट्रिगर से कनेक्टेड होगी, और फिर उसके बाद स्मिथ ट्रिगर स्क्वायर वेव जनरेट करता है, और फिर यहाँ पर ये इन्वर्टर से कनेक्टेड होगी which will generate a square wave, ठीक है. सो आप ये देख रहे हैं कि पिन नंबर 5 और 6 मतलब मॉड्यूलेटिंग इनपुट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आ रही है उसके थ्रू हम कांस्टेंट करंट सोर्स के थ्रू हम उस वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे जो हमें इनपुट पर चाहिए. ये इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो कंट्रोल जो यहाँ पर आएगा दैट विल बी कनेक्टेड बाय द बफर. वो बफर के थ्रू एक तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड होगा, और एक सिरा उसका उस कैपेसिटर जो ट्यूनिंग कैपेसिटर है उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है. और फिर हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे होंगे, स्मिथ ट्रिगर वाला ओप एम्प यूज कर रहे होंगे. यहाँ पर देखिए स्मिथ ट्रिगर वाले ओप एम्प से हम यहाँ पर
RA RB रेजिस्टेंसेस का यूज करके फिर इसमें ट्रिगर के आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव मिल जाएगा यहाँ पर, और उसे हम लोग इन्वर्ट करके यहाँ पर स्क्वायर वेव वेवफॉर्म आउटपुट पे जनरेट कर लेंगे। ठीक है। सो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड अपॉन R1, C एंड V इनपुट, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस जो भी V5 पे लगा हुआ है, और VC जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, उसी पे आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। ठीक है। सो pin number 566 circuitry generate both square and triangular waveform whose frequency is set by external resistance and capacitor varied by applied DC voltage. IC 566 at pin number 8 is a 8-pin IC, two square wave, two output pins, one for a square wave, another one for triangular wave. ठीक है ना। पिन नंबर 5 पे वोल्टेज लगता है, आउटपुट मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज लगता है, और R1 C1 और कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पर लगता है। ठीक है। 566 के अक्रॉस जो कैपेसिटर C1 से जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है ना, उसका यूज करते हैं, और उसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का यूज करके हम लोग यहाँ पर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं। स्मिथ ट्रिगर से जो भी स्मिथ ट्रिगर और इन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है उसके जरिए हम यहाँ पर क्या जनरेट करते हैं? स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। ठीक है ना। A1 बफर की तरह से यूज किया जाता है, A2 ट्रिगर की तरह से यूज किया जाता है स्मिथ ट्रिगर, और A3 जो है वो इन्वर्टर की तरह से यूज किया जाता है। ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होता है वो क्या यूज करेगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का यूज हम लोग मॉड्यूलेटिंग इनपुट वोल्टेज को जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। और उसी इनपुट वोल्टेज से आपका कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, जिसके जरिए हम लोग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। सो ये 566 की ओवरऑल कहानी थी। ठीक है। और इस 566 का यूज करके आप क्या जनरेट कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट जनरेट कर सकते हो। जैमिंग इक्विपमेंट मतलब आप उस तरीके के फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब जनरेट होगा तो वहां पर जो बाकी सिग्नल्स होंगे जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होंगे वो उनको डिस्टॉर्ट कर देगा, और आप जो है अगर बहुत हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करोगे तो वो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पे में कोई भी सिग्नल आने नहीं देगा, उसको जैम कर देगा। देन आफ्टर फंक्शन जनरेटर, क्योंकि स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव आप यहाँ पर जनरेट कर ले रहे हैं, तो ये फंक्शन जनरेटर के तौर पे यूज किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा PLL है, और PLL का एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम होता है VCO, तो हम लोग VCO को PLL में भी यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, मतलब कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही थी, इसको सिंथेसाइज करने के लिए भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइजेस, इसके लिए भी हम लोग VCO का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ VCO। नेक्स्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का PLL, उसे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। अगर आपके कोई डाउट है इस पर्टिकुलर VCO के बारे में तो आप पूछ सकते हैं।